بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، نیوز پیپر آرٹیکل سیریز میں آج ایک اور انفارمیٹیو کرنٹ افیئر سے ریلیٹڈ نیوز آرٹیکل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ نیوز ایک دن پرانی ہے اور یہ ایک امپورٹنٹ نیوز ہے، اس لیے میں آج اس کی ٹرانسلیشن کروانے والا ہوں۔ تو چلتے ہیں نیوز کی طرف۔ President of UAE due in Islamabad tomorrow. President Sadr of UAE United Arab Emirates due in یعنی متوقع ہے، پہنچنے والے ہیں، اسلام آباد یعنی پاکستان پہنچنے والے ہیں، ٹمارو کل، یعنی یہ ایک دن پرانا اخبار ہے تو یہاں پر ٹمارو لکھا ہوا ہے جو کہ آج پہنچ گئے ہیں۔ The President of United Arab Emirates UAE Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan will arrive in Pakistan for an official visit on December 26 Friday، یعنی کہ یہ آج پہنچنے والے تھے، یہ جو ہے نا جمعے والے دن پہنچنے والے تھے 26 دسمبر کو، تو یہ ایک دن پرانا اخبار ہے۔ According to a statement from the Foreign Office issued on Wednesday, the President of UAE United Arab Emirates یعنی UAE جو ہے UAE کا صدر جس کا نام ہے شیخ محمد بن زیاد ال نہیان will arrive، یہ جو ہے نا یہ پہنچیں گے، یہ فیوچر ٹینس استعمال ہوا ہے، ان پاکستان پہنچیں گے فار این آفیشیل وزٹ یعنی سرکاری دورے پر، اون کب، دسمبر 26 یعنی فروری 26 یعنی جمعے والے دن وہ پاکستان کے سرکاری دورے پر پہنچیں گے۔ اکارڈنگ ٹو اے اسٹیٹمنٹ، بیان کے مطابق، فرام کہاں سے آیا بیان؟ فارن آفس، پاکستان کے فارن آفس سے جاری ہوا ہے۔ کب ہوا ہے؟ ویڈنسڈے کو۔ This will be second time the Emirati President will visit Pakistan this year, having met Prime Minister Shehbaz Sharif in Rahim Yar Khan in January. However, Friday's trip, according to FO, will be his first official visit as president. This will be second، یہ ہوگا this will be، یہ ہوگا the second time، دوسری دفعہ، the Emirati president یعنی اماراتی پریزیڈنٹ کا دوسرا دورہ ہوگا، will visit، دوسری بار یہ دورہ کریں گے پاکستان this year، اس سال یہ ان کا دوسرا جو ہے نا دورہ ہے۔ having met، مل چکے ہیں، کب مل چکے ہیں؟ پرائم منسٹر شہباز شریف سے، کہاں پر؟ ان رحیم یار خان۔ کب ملے ہیں؟ جنوری میں، اس سال جنوری میں یہ پہلے یہاں کا دورہ کر کے مل چکے تھے، لیکن اب یہ سرکاری دورے پر وہاں سے آئے ہیں۔ however، تاہم، فرائیڈے ٹرپ یعنی جو اب کا جو فرائیڈے والا جو وزٹ ہے، اس کا جو دورہ ہے، اکارڈنگ ٹو فارن آفس کے مطابق، will be his first official visit یعنی اس کا سرکاری دورہ ہوگا ایز پریزیڈنٹ کے طور پر اس کا پہلا سرکاری دورہ ہوگا یہ۔ According to a statement, President Al Nahyan will review the entire spectrum of bilateral relations with PM Shehbaz and the pair will exchange views on regional and international issues of mutual interest. According to statement، بیان کے مطابق، President Al Nahyan will review the entire spectrum یعنی مکمل جائزہ لیں گے of bilateral relations یعنی دو طرفہ تعلقات میں، with کس کے ساتھ؟
PM शहबाज के साथ एंड द पेयर विल एक्सचेंज व्यू, और जो है दोनों रहनुमा, पेयर कहते हैं, पेयर विल दोनों रहनुमा विल एक्सचेंज व्यू तबादला ख्याल करेंगे ऑन किस पर, रीजनल इलाकाई एंड इंटरनेशनल इश्यूज और बैनुल अक़वामी मामलात पर, ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट जो कि दोनों के मफाद में है, यानी जो कि दोनों के मफाद में है उन मामलात पर बातचीत करेंगे। दिस विजिट This visit will provide an important opportunity to further strengthen the long-standing brotherly relation between Pakistan and UAE, United Arab Emirates, the Foreign Office said. The visit will provide, यह जो है ना दौरा जो है ना मुहैया करेगा, फराहम करेगा, एन इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी, एक अहम मौका, टू फर्दर स्ट्रेंथन, मज़ीद मजबूत करने के लिए, मज़ीद दवाम बख्शने के लिए, द लॉन्ग स्टैंडिंग यानी देर से जो, तवील अरसे से कायम या देरीना जो, ब्रदरली रिलेशनशिप यानी बरादराना जो ताल्लुकात हैं जो कि तवील अरसे से कायम है, किसके दरमियान, बिटवीन लगा के बताया है, पाकिस्तान एंड यूएई के दरमियान। ये किसने कहा है, फॉरेन ऑफिस ने ऐसा कहा। The Foreign Office added that the visit reflects the depth of bilateral relation between the both nations and their commitment to bolster collaboration in key areas including trade, investment, energy, development and regional stability. The FO यानी फॉरेन ऑफिस एडिटेड मजीद कहा कि द विजिट ये जो दौरा है रिफ्लेक्ट अक्कासी करता है द डेप्थ गहराई की ऑफ बाईलिटरल रिलेशन दो तरफा ताल्लुकात की बिटवीन के दरमियान बोथ नेशन दोनों कौमों के दरमियान एंड देयर शेयर्ड कमिटमेंट्स देयर उनकी शेयर्ड कमिटमेंट मुश्तरका जो अज़म है उसका, टू बोल्स्टर मजबूत करने के लिए, बोल्स्टर कहते हैं मजबूत करना, फ़रोग देना, कोलेबोरेशन ताउन को, इनकी एरियाज यानी अहम शोबों में, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है ट्रेड तिजारत, इन्वेस्टमेंट सरमायाकारी, एनर्जी तवानाई, डेवलपमेंट्स तरक्की, एनर्जी डेवलपमेंट यानी तवानाई की तरक्की, एंड रीजनल स्टेबिलिटी और इलाकाई इस्तेहकाम इनमें शामिल है। इन एरियाज में जो है Pakistan and the UAE share close diplomatic, economic, and cultural ties, strengthened by historical connection and a large Pakistani expatriate community in the Emirates. Pakistan and the UAE share close ties, मुश्तरका मजबूत ताल्लुकात, इन ताल्लुकात में क्या क्या आते हैं, डिप्लोमेटिक सफारती, इकोनॉमिक मुआशी एंड कल्चरल और सकाफती, स्ट्रेंथन बाई जो कि दवाम बख्शता है या मजबूत करता है, किस तरह, हिस्टोरिकल कनेक्शन तारीखी जो रवाबित है, एंड और अ लार्ज लार्ज यानी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी एक्सपेट्रिएट पाकिस्तानी जो तारकीन वतन है, कम्युनिटी बरादरी यानी लोग, इन द इमरेट्स जो कि यूएई में रिहाइश पजीर जो पाकिस्तानी तारकीन वतन की एक बड़ी तादाद है, इनकी वजह से भी ये दवाम बख्शा है, ये जो है ना दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को दवाम बख्शा है। द यूएई is one of the Pakistan's largest trading partner and a key source of remittance with thousands of Pakistani working in various sectors. Both countries collaborate on defense,
energy and investment projects, with the UAE frequently providing financial aid and humanitarian assistance to Pakistan. The UAE the UAE United Arab Emirates is one of जो है ना पाकिस्तान लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, ये है पाकिस्तान का एक जो है तिजारती जो है शराकतदार है, एंड और की सोर्स एक अहम जरिया है ऑफ रिमिटेंस तरसीलात का, विथ थाउजेंड्स ऑफ पाकिस्तानी वर्किंग, बहुत से पाकिस्तानी जो है ना हज़ारों की तादाद में पाकिस्तानी काम कर रहे हैं इन वेरियस सेक्टर, मुख्तलिफ शोबों में। कहाँ पर? अरब इमरात में उसकी बात हो रही है। बोथ कंट्रीज़ दोनों ममालिक कोलैबोरेट ताउन करते हैं ऑन डिफेंस दिफा पर, एनर्जी और तवानाई में, एंड इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स यानी सरमाकारी के जो मंसूबे हैं उनमें ताउन करते हैं, विथ द यूएई के साथ ताउन करती है, फ्रीक्वेंटली बार बार या अक्सर, प्रोवाइडिंग मुहैया करती है फाइनेंशियल एड माली जो ताउन या मुआशी ताउन, एंड और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, और जो है ना इंसानी हमदर्दी करती हैं टू पाकिस्तान के साथ यूएई। In April this year, Pakistan and UAE signed and exchanged multiple memorandums of understandings यानी MOUs to further strengthen bonds between the people of both nations. In April this year, इस साल अप्रैल में पाकिस्तान और UAE साइन दस्तखत किए हैं एंड एक्सचेंज और तबादला किया है मल्टीपल मुतअद्दिद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी एमओयूज़ को कहते हैं मफाहमत की याददाश्तों पर, टू फर्दर स्ट्रेंथन मज़ीद मजबूत करने के लिए, बॉन्ड्स यानी जो रिश्ता है जो ताल्लुक़ है उसको, बिटवीन के दरमियान, द पीपल ऑफ बोथ नेशन यानी दोनों मुल्कों के लोगों के दरमियान जो है ना इस रिश्ते को मजबूत करने के लिए ये तबादला ख्याल किया और एमओयूज़ साइन किए हैं। टू ऑफ द एमओयूज़ वर फॉर कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ कल्चर and the establishment of a joint committee for consular affairs, according to report report के मुताबिक two of the MOUs दो MOUs were for cooperation ताउन के लिए थे in the field of किसमें field of के मैदान में, यानी किन मैदान में थी वो सब ताउन, कल्चर यानी सकाफती, एंड इस्टेब्लिशमेंट और क़याम की किस चीज़ की ऑफ जॉइंट कमेटी की फॉर कौंसलर अफेयर कहते हैं किस चीज़ को कहा जाता है कौंसलर अफेयर, वो उमूर जो कौंसलर अफेयर यानी वो उमूर जो किसी मुल्क के कौंसल खाने में या सफारत खाने के ज़रिए अपने शहरियों और दूसरे मुल्कों में कानूनी या सरकारी खिदमत फराहम करने से मुतालिक होते हैं, जैसे वीज़ा या पासपोर्ट के मामलात, सयाहों की रिहाइशों में मदद, कानूनी मदद और सरमायाकारी और तिजारत वगैरह में ताउन वगैरह शामिल है। इसको कहा जाता है कौंसलर अफेयर्स। The third MOU was signed between the Federation of UAE Chambers of Commerce and Industry and the Federation of Pakistan Chambers of Commerce and Industry for the establishment of the UAE Pakistan Joint Business Council. तीसरा जो MOU है वह साइन दस्तखत किया गया है बिटवीन किसके दरमियान, फेडरेशन ऑफ यूएई चैम्बर्स के
اور چیمبر آف کامرس کے کامرس اینڈ انڈسٹری ان کا اور پاکستان کی فیڈریشن آف چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے درمیان یہ MOUs پر سائن ہوا ہے۔ فار کس لیے سائن ہوا ہے؟ دا اسٹیبلشمنٹ قیام کے لیے آف دا کس کا UAE اینڈ پاکستان جوائنٹ بزنس کونسل، UAE اور پاکستان کا جو مشترکہ جو بزنس کونسل کے قیام کے لیے یہ جو ہے نا تیسرا MOU سائن ہوا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، یہ آج کی ورڈز میننگ ہے، ان کی آپ اسکرین شاٹ لے لیں۔ ویڈیوز اگر پسند آتی ہیں تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر آپ کو ملے۔ تھینکس فار واچنگ، اسٹے ود اس۔